Hello, my dear learners. Very good afternoon. And I have come up with new content today as my friends as well as my learners and viewers, they insisted me to make videos on this particular topic I have come up with. So today I'll be discussing about the basic content of spoken language, right? So we'll be discussing on grammatical sections also in coming days, but this is the very first video on this very subject. So we'll be discussing about the basic content, and come, let's join. What are the basic content to know, and how to learn spoken language, spoken English. So we'll be discussing on that. So as I'm making these videos for the students or the learners or the viewers, so those who come from the vernacular background, so I'll be using Hindi in between to make it very much lucid and understandable. So मैं आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि जो फ्रेंड्स के रिक्वेस्ट पे या डिमांड पे मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, आप लोगों को ज़रूर उपयोगी साबित होगी, ज़रूर आप लोगों का मदद करेगा। चलिए चलते हैं, इस कंटेंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द सम इम्पॉर्टेंट स्किल्स फॉर कम्युनिकेशन, some important skills for the communication, right? And if you know, we establish communication with each other. That means हम जब भी बातें करते हैं उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो मेरी बात किसी और को समझाने की जो एक प्रोसेस होती है, कम्युनिकेशन उस पर आता है। तो चलिए, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें ज़रूरत होती है। तो हमारे पास जो बेसिक चीज़ें सीखने के लिए जो कंटेंट मैं देने जा रहा हूँ आप सभी को, और ये है LSRWC। तो ये LSRWC ये क्या है? So basically we understand that L stands for listening skill. And what is listening skill? If you want to learn spoken English, then you got to be a very rapt listener, intensive listener. You got to be very much wrapped in listening. Otherwise, you cannot understand the language. You cannot learn the language, right? So if you want to learn spoken English, then you got to be the very pure listener first. Then come to next one, that S. S stands for speaking skill. So this is very much important. As we all know, हम सभी जानते हैं कि हमने जो हिंदी सीखी है या कोई अपनी मातृभाषा सीखी है, उसको सीखने के लिए हम कभी स्कूल नहीं गए। उसको हमने घर पर ही सीखा, या गांव में अपने दोस्तों के साथ सीखा, अपने परिजनों के साथ बात करते हुए सीखा। तो इसके लिए अलग से स्पोकन क्लासेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो कैसे वो संभव हुआ, मैं बताता हूँ आप सभी को कि we just copy our parents or our friends or our elders, right? So that is called art of imitation. And what we do, we follow the process of imitating, and we start imitating what our parents say, what our parents speak, right? So in that process we learn any language, that may be your mother tongue and any other tongue. So speaking skill is very much important. In that regard, you got to try to imitate your friends, your parents, your elders, your teachers, anyone else. Okay, now come to next one. R is there. R stands for reading skill. And as we all know, if you want to learn spoken English, then you got to enhance the capability of reading. In doing that, you enhance your vocabs, your lexical items and jargons and so many things. So you have to keep a habit of reading more and more and more. So reading skill is very much important to learn spoken language. Now the next one, W is there. W stands for writing skill. And as everybody knows that somebody who wants to learn spoken English, they may listen very carefully, attentively, rapidly, and start imitating. That is speaking skill. Then after that,
starts developing the habit of reading more and more magazines, more and more books, more and more newspapers, and so many things, whatever the reading content you get, and you keep the habit of reading and start imitating. Now the next one is writing skill that depends on uh, your capability of writing, and that comes out from all these four. No, you listen, you speak, you read, and you start writing. If you are a student, if you are a learner, if you are very much interested in learning, then you must write also, and you start developing your writing skill also. And after that, last but not the least, C stands for communicative skills. So this is very important. हम सभी जानते हैं कि एक दूसरे के बीच में जो संपर्क स्थापित करना होता है वो भाषा के माध्यम से और जेस्चर्स के माध्यम से हम लोग करते हैं। ऐसे जानते हैं कि जेस्चर्स का लैंग्वेज भी वर्ल्ड वाइड इस्टेब्लिश्ड है, जो बोल नहीं सकते वो जेस्चर्स को यूज़ करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कम्युनिकेटिव स्किल्स में कैसे लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि स्पोकन इंग्लिश को सीखने के लिए ये 5 चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी होता है, जिसको हम लोग LSRWC प्रोसेस बोलते हैं। तो इन 5 जो लेटर्स यहाँ पे दिखाया गया और इनको डिफाइन किया गया, इन पर कंसंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिगिनर्स हैं, अगर आप लर्नर्स हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं इंग्लिश, आपकी पैशन का चीज़ है, अगर आप बहुत ही पैशनेट हो, इफ़ यू आर वेरी मच पैशनेट, if you are very much interested in learning spoken English, develop your speaking capability, understanding capability, and reading capability, then you got to concentrate on these process. So it will definitely make sure changes in your lifestyle. As in modern days, we all know that English is very much important in the developing era. So मैं आशा करता हूँ आप सभी इसको कंसंट्रेट करेंगे। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जिसको सिखाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आज इस पर वीडियो बनाया, और ये मेरी बेसिक क्लास भी थी। तो आने वाले दिन में मैं और नया ज़्यादा कंटेंट अपलोड करूँगा। आप सभी को मेरा बहुत ज़्यादा प्यार धन्यवाद देना चाहूँगा। आप ज़रूर मेरे YouTube चैनल्स पर स्टिक करके रखिएगा, ताकि आपको नया वीडियोज़, नया कंटेंट तुरंत मिल जाए। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और हाँ, लाइक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको भी कर लीजिएगा, ताकि हम और भी ज़्यादा इंथुजियाज़म के साथ में आप लोगों को मैं मदद पहुंचा सकूं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।